Assalamu alaikum. Today I'm meeting an actress who I have been wanting to interview for a while, but she travels a lot. तो आज कराची में है तो मुझे ये मिल गई. इनकी मूवी आई है वखरी, and yes, I'm meeting Faryal Mehmood. When I think of Faryal, I think of an actress who isn't scared of making unique choices, who does things differently, and she does them so well. So that's something I admire about her. अपने एक रास्ता निकाल रही हैं जो बिल्कुल फ़र्क है, बिल्कुल मुख्तलिफ है. वखरी का मतलब अनोखी होता है, and true to the title of her movie, she is वखरी. Have you gotten that a lot, Faryal? I have. कि तुम तो हो ही वखरी. Of course तुम वखरी करोगी, तुम तो हो ही वखरी. Yeah, but I actually own up to that title. When I heard the name of the film, I was like, ooh, sounds like me, sounds very much like me. I even have like a neon sign of Wakhri right above my bed, and it's like a pink light, and it's on all the time, and I very much own it. Like it's meant for me. पाकिस्तानी सिनेमा को लेकिन का कोई फ्यूचर आपको नज़र आता है? अच्छा, आपने एक आपकी मूवी आई विच इज़ ट्राइंग टू बी डिफरेंट, विच इज़ अभी हम बात कर रहे थे कि इट्स हेडलाइंड बाय वुमन, इट्स अ वुमन स्टोरी, डजंट फॉलो द यूजुअल फॉर्मेट कि एक मर्द है और गाने हैं और रोमांस है. वो स्टोरी ही नहीं है. आपको लगता है पाकिस्तानी सिनेमा रेडी है ऐसी स्टोरीज के लिए कि फिल्म मेकर्स लॉस में ही जाते रहेंगे? आई थिंक जिस ऑडियंस के लिए ये फिल्म बनी है, a lot of the demographic we're hitting is very educated and upper middle class, and also middle class, but like the educated middle class. जहाँ हम masses में जाते हैं वहाँ it's very difficult to get them in the cinemas. They're not coming anymore. That's the problem. They're not even to watch a Hollywood film. No. कुछ भी नहीं. शायद मैसेज आ जाएं तो वो देख लें और उन्हें अच्छी भी लग जाए. बात यह है कि लोग आ रहे ही नहीं है सिनेमा. बिल्कुल. इस पॉइंट पे फिर भी सिनेमा में फेथ रखना क्या एक क्लेवर मूव है? I think faith रखने से तो कुछ नहीं होगा. हमें कुछ करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? रिवाइव करना पड़ेगा. कैसे? रिवाइव तो यही होता है कि आप फिल्में बनाते रहें. और क्या तरीका? No, we'll have to go like हर इंडस्ट्री का अपना एक तरीका होता है उसको चलाने का. अब हम अपनी इंडस्ट्री को इंडिया की इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं मिला सकते. उनकी सालों साल से, पता नहीं सदियों से चलती आ रही है एक इंडस्ट्री. 4th जनरेशन 5th जनरेशन पे वो लोग आए हुए हैं, एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड इवन देयर स्टफ इज नॉट वर्किंग एनीमोर. So right now, I think what is a good opportunity for us, we are not going after the commercial cinema because I don't think commercial cinema exists anymore. People are not even like buying it. I think we have to talk about stories and talk about things and offer different people different genres and maybe come up with something to revive. Maybe अगर हम स्क्रीनिंग्स करें डिफरेंट जगहों पे जाके फिल्मों की, मैं वखरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिल्मों की बात कर रही हूँ. जी. स्क्रीनिंग्स करते हैं हम जाके छोटे छोटे इलाकों में. जैसे अगर हम खुदा की बस्ती चले जाते हैं, हम शाह फैसल कॉलोनी चले जाते हैं, या हम छोटे छोटे एरियाज़ में जाके एंड जस्ट शो देम द ट्रेलर और शो देम इवन द फिल्म. यानी एक्साइटमेंट बढ़ाएं ना किसी तरह सिनेमा के लिए, फिर से वो एक्साइटमेंट वापस लाएं जो कभी होती थी. बिल्कुल. इसमें लेबर लगेगा, इसमें काम लगेगा, इसमें टाइम भी लगेगा. हमें, क्योंकि हमने उनको इतना डिसअपॉइंट किया. ये हमारी गलती है, ये उनकी गलती नहीं है. वो आते थे फिल्म देखने. ये हमारी गलती है, हमने इतना बुरा काम उनको दिखाया है करके. और कि वो क्यों खर्च करेंगे? मैं भी नहीं खर्च करूँगी. 1500 रुपये कितनी की टिकट आती है? आप देखती हैं पाकिस्तानी फिल्म्स? I used to. अच्छा. Yeah. I used to. You lost faith just like the Pakistani. Just like everyone else. Just like everyone, and I was so afraid of doing a film. Like everyone talks about, oh, now you've done a film. Now you've done. Yes, now I've done a film, but I've chosen to actually do a film. Films were coming to me since I had lost the weight and everything. I didn't want to do a film because I didn't see a future. I was like, ये तो बर्बाद करेंगे मुझे. No,
I need to know what you can make so I can trust you with my abilities and my talent, you know. फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सब्र लगता है, बहुत डेडिकेशन और बहुत पैशन लगता है और बहुत सारा पैसा लगता है. And does it pay well? There's a what? Does it pay well to the actors? No, I think dramas pay much better, commercials pay much better. हाँ, of course. हम लोग फिल्म अपनी एक अपने Passion. आप को हाँ सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं. आपको लास्ट टाइम स्क्रीन पे मैंने रकीब से में देखा था और आप 3-3.5 साल बाद वापस आई हैं स्क्रीन पे विद वखरी. Why this long break? Right after Rakib Se, you know, I had in the span of that time, I had gotten married, and then I also got divorced, and then Rakib Se happened, and then there was a lot of बहुत सब कुछ चल रहा था मेरे इर्द गिर्द, मेरे साथ, प्रोफेशनली, पर्सनली, and I felt like after Rakib Se, I wanted to just take some time off and just not do anything and just do me, just give some time to me. और ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है. When I do a character, I try to take 2 to 3 months off right after the character because I have to come back to myself. I forget what I liked, what did I do as a person. It's real. It's really real. Yeah, it's आप very उस intense. कैरेक्टर की तरह सोचने लगती हैं. Yeah. That's very dangerous it's also. very dangerous. है ना? Yeah, it's very hectic. It's very इमोशनली कंज्यूमिंग. डेंजरस का मेरा मतलब था क्या आप उन Emotionally इमोशंस consuming. में, उन कॉम्प्लेक्सिटीज में, उस उतार चढ़ाव में जो उस कैरेक्टर की कहानी में आप इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं. फिर हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? यू टेक टाइम ऑफ. travel. यू ट्रैवल. I travel and अच्छा जब मैं ट्रैवल करने निकलती हूँ तो शुरू में obviously I have no idea what I'm doing because I'm not me. I'm that character, and then ahista in the process I'm like, ooh, sun, okay, let's sit here and eat a sandwich. Ooh, यहाँ से अच्छा music आ रहा है, let's go in there, let's dance in there, you know. And then ahista I do things that make me and are fun to me, and I come back to myself where I sound to myself like myself. But how do your family and friends cope? The people around you. Oh, they don't live with me. शुक्र. कभी तो मिलती होगी, कभी तो मिलती होगी ना, जाहिर है. नहीं कहते कि ये क्या हो गया. घर वाले तो सब अमेरिका में रहते हैं ना. हाँ. तो और मेरे सारे दोस्तों को ये पता है कि जब मैं कोई कैरेक्टर करने लगती हूँ मुझसे कोई नहीं मिलता. ये बहुत अजीब सी बात है. हाँ, ये सबको अच्छी तरह पता है कि ये जब कैरेक्टर साइन अप करेगी तो ये 3 महीने के लिए गायब हो जाएगी. बीच में शायद एक रोता हुआ फ़ोन आएगा और मैं उनको देखूंगी, अपने सारे दोस्तों को एक ग्रुप कॉल में सबको देखूंगी, मैं थोड़े से आंसू बहाऊंगी. I'm like, I miss you, I love you, I miss you, I love you, okay, bye. You're in your zone. I'm in my zone. My mother doesn't speak to me. No one is allowed to speak to me. I do this to myself. No one has told me to do this. हाँ, और मैं अभी ये सोच रही हूँ कि रकीब से वो ड्रामा था जो बड़ा ही स्टार स्टडेड था, बहुत बड़े बड़े उसमें नाम थे. उन बड़े नामों में जो यंग नाम थे, विच वर यू एंड इकरा अजीज़, यू ऑल्सो स्टूड आउट. बड़े अच्छे रिव्यूज़ आए थे, सबने बहुत पसंद किया था. और मेरे ख्याल से तो उसके बाद आपके पास स्क्रिप्ट्स आई होंगी खासी. उस वक्त आपने ब्रेक ले ली और स्क्रिप्ट्स करने की, क्या वो स्क्रिप्ट्स अच्छी नहीं थी कि यू जस्ट नीडेड टू गिव योरसेल्फ दैट टाइम आउट? वो स्क्रिप्ट्स रकीब से अच्छी नहीं थी. रकीब से अच्छी तो बहुत कम स्क्रिप्ट्स होंगी फरिया. दैट्स वेरी पिकी. आर यू पिकी? Yeah, I don't feel like I can go back to आप हाथ धो ले मैं चाय बना के लाती हूँ, you know. हालांकि बिकता वही है. हालांकि बिकता वही है. अच्छा, ऑल्सो मैं ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करती हूँ. I actually do this because I love it. I live away from my family. Like when I'm doing a project, I'm away from my family. I'm all alone. Like I don't even speak to my friends. Like this is how much I am in it and I love it. I do it to satisfy myself and the hunger in me to just be someone, just be that character and live someone's life. I think ये सबसे बड़ा एक दुनिया का नशा है. And what about paying the bills? Paying the bills, हाँ बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है कि
हो जाता है वो, चैलेंज गुड मतलब फॉर हो यू। जाता है। हाँ, आई फील लाइक मुझे मम्मा कहती तुम तो लक्ष्मी हो, अच्छा। कि हाँ तुम पे तो बरसता है, क्योंकि आई हैव लर्न दैट नो मैटर व्हाट यू डू, अगर आप अगर you're not supposed to have money right now, you will not have money no matter what you do, no matter where you go, no matter who you talk to, it's not going to happen. When it's going to happen, it's going to happen. Like I've shot for 2 films before these films came out. They did not come out, they were shelved. अच्छा। Yeah, Yastra ki Sentimental. I was playing, Yastra was the main lead, I was the second lead. It was a very fun, बहुत अच्छी shoot भी हुई थी. Funds का मसला हुआ और वो shelf हो गई. Then I was also doing Sorry. And that also got shelved. तो वो वही बात है ना, वक्त. So it's really not in my control. When it's not in my control, why do I have to stress about it? Money will come. नहीं, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पैसों का शौक भी नहीं है। नहीं, मुझे कपड़ों का शौक है। वो भी तो पैसों से आते हैं। हाँ, जो पैसे आते हैं वो सारा मैं ट्रैवलिंग और कपड़ों पे लगा देती हूँ। ट्रैवलिंग, अब हाँ, आई नो यू लव टू ट्रैवल, आई नो दैट you live in different places. I just asked you where do you live. You said that's a tricky question. That's a tricky question. But not being stationed here Yeah. in Pakistan, particularly in Karachi, Yeah. which is the hub for Yeah. entertainment right now in Pakistan, आपका काम उसकी वजह से भी रुकता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल. So many times. Like if I'm in Europe or if I'm in the States, I would get calls, oh, we're doing this song and we're doing this music video or we're doing this commercial. And I'm like, I'm not there, you know. But I'm always ready to like come back and everything and fly back if they want to fly me back. But that's a bit too much for them ना, उनके पास options और भी बड़े होते हैं। Exactly. फिर भी आपने कभी rethink नहीं किया कि नहीं मैं यहीं टिक के बैठ जाऊँ 6-8 महीने? Maria, don't you think that's like driven by fear? Why do I want to live a life that's driven by fear? To earn more money, Faryal. Okay, that's refreshing. That's very refreshing. I feel like ऐसे भी मेरे पास सोचना पैसे चाहिए। अगर ख़त्म हो जाएंगे या हो जाते हैं तो मैं इतना ट्रैवल कर रही होती हूँ, मैं कहीं कोई जॉब कर लूँगी. You know, I see, some odd job. Yeah, some odd job. Why Really? not? You get so much experience. You observe people. My work is to observe people. I don't really talk so much in a gathering. I watch people, what they do. You know, and I think that's what makes me, जब मैं कोई कैरेक्टर कर रही होती हूँ, एक अजीब सी कोई चीज़ निकल के आती है, and I'm like, where the hell did I even learn that? So you probably absorbed it exactly. while watching people. Exactly. Yeah? So when I do these odd jobs, it's good experience and you get to make such good connections, like from people all over the world, you know, and who have nothing to do with your life, but they would give you like a profound advice or a profound something कि आप सोचते हैं कि wow, I never thought like that. So life, I would say life is not just about like, you know, money and just work, and I also try to stay away from all this attention and the glitz and glamour. I don't want to get used to it. I don't want it. Of course, I like it when people give, like, you know, when people show me attention and everything, I'm like, oh, अच्छा, आप यहाँ बैठ जाएं, चाय, ये वो, जूते उतार रहे हैं, बाल बन रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है, उस वक्त के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए I know that I don't want to get used to this. क्या कोई वक्त था जब आपको ये अच्छा लगता था? Maybe when you were younger, was there a time when this attracted you? No, you've always been a wanderer. Yeah. है ना? Yeah. You're a wanderer, wandering Yeah. from project to project to Yeah. country to country. Yeah. 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 So I keep reminding myself, even Wakhri, with Wakhri coming out and, you know, me being in places and interviews and everything, every night I would go home and remind myself that this is all just very temporary. Don't get used to it. Because your film is going to come off in what? कितने weeks? ठीक है, फिर वो कहाँ जाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तुम फिर फरियाल ही हो, और तुमने पिज़्ज़ाज भी डिलीवर किए हुए हैं, तुमने एक मैनेजरियल जॉब भी की हुई है स्किन केयर कंपनी में, तुमने मैक के लिए भी काम किया हुआ है, तुमने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब भी की हुई है, तुमने वो सब किया हुआ है, तो तुम सब हो.
don't get caught up in all of this, because this is all just not even real. It's shashka. It is real for a lot of people in your industry. It's very sad. It's very sad. मुझे उनको देख के बहुत तरस आता है उनके ऊपर कि ये भूल गए हैं कि ये खुद कौन थे? नहीं, थे की भी बात नहीं है, ये भूल गए हैं कि दुनिया ये नहीं है, दुनिया यहाँ रिवॉल्व नहीं करती, यहाँ से बाहर हमारी इंडस्ट्री से बाहर एक दुनिया है, उससे बाहर निकलो तो पाकिस्तान से बाहर एक दुनिया है, उससे बाहर निकलो तो मतलब दुनिया ही दुनिया है जो आपको नहीं जानती, आप उनके लिए कुछ नहीं है. एंड या You're so different. थैंक यू. You are different. बकरी. You are वक्री. कुछ और लाइनअप हुआ है वक्री के बाद अभी एक्टिंग प्रोजेक्ट? Is there something happening? There are a few things that I am considering. Good things. TV drama or movie? नहीं, TV drama तो नहीं है. अच्छा. There might be series. अच्छा. But it's बहुत शुरू का भी process है, so I don't wanna Reveal too much. Yeah. Also, even with Wakhri, I didn't really announce anything कि मैं sign film कर रही हूँ या कुछ भी. Wakhri पूरी shoot भी होगी, मैंने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया. Only when Wakhri's trailer came out, they were like, "Oh, Faryal did a film," because I'm just like, क्या करूँगी मैं हाँ फिल्म की है मैंने बता के कि जी हाँ जी. जब आने वाली हो तब लोगों को बताओ. हाँ. Faryal, you're such a good actress. You are good at what you do. Also, I get that you obsess over what you do, जिसकी वजह से शायद वो स्क्रीन पे नजर आता है. फिर भी एक वर्ड आपसे एसोसिएट होता है constantly bold. Bold, easiest adjective to put with you. Do you not like that? Or do you not care? बोल्ड इस स्टेटमेंट पे मुझे थोड़ी सी ना हंसी आती है और क्योंकि आई थिंक इट्स जस्ट द लैक ऑफ टर्मिनोलॉजी और कुछ भी नहीं है. क्योंकि अगर वो बोल्ड इसलिए मुझे बोल रहे हैं क्योंकि मैं बोल रही हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है, just because I'm a woman and I'm saying what I'm thinking, you're calling me bold. But if I was a man and if I had said the same thing, I wouldn't have been bold. I would have just been like, yeah, a man, If they're talking about my clothes and if they're objectifying me, then I would say, no, it's not bold. I can show you bold. It is not bold. This is not bold. This is just me being me. It's ठीक है, आप लोगों के लिए बोल्ड है तो ठीक है, बोल्ड सही. Hashtag bold. हाँ, it could also be about your acting choices. Now. हाँ, हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. मुझसे लेकिन मुझे नहीं लगता उसके बारे में वो बात कर रहे होते. मुझे भी नहीं लगता. वही ना कि इतना कौन सोचेगा, इतनी इंटेलेक्ट आ जाए तो यही बहुत बड़ी बात है कि. लेकिन ये वर्ड थोड़ा आपके एक्चुअल काम को ट्रिविलाइज करता है ना, क्योंकि आप एक एक्ट्रेस हैं, आपने ये रोल किया है, यू पुट योर हार्ट इनटू इट. लेकिन लोग आपके कपड़े और बोलने के तरीके और जो बात आप ओपनली बोल देती हैं, जो बहुत से लोग नहीं बोलते, उसे देख के कहते, ओह शी इज बोल्ड. एंड यही वक्री करने का एक रीजन, जब वो रेड ड्रेस पहन के बैठी हुई होती है, बैकलेस ड्रेस, and she's saying, चलिए देख लीजिए, लेकिन फिर सुन भी लीजिए. तो वही बात है कि आपको सिर्फ दिख रहा है, इसने ये पहना है, देखो इसकी टांग दिख रही है, देखो इसका ये दिख रहा है, वो दिख रहा है. आप सुन ही नहीं रहे हैं कि वो अपने मुंह से बोल क्या रही है. क्या ये क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है? Why is she there? What is she saying? हाँ, सेंसेस है ना, आंखें, कान, नोज, they're all supposed to work together and give you an experience. You are not willing to get that experience. You are blocking that experience by saying, I reject this experience.
I decide to judge. अच्छा फरियाल, आपने कभी फिर सोचा कि मैं थोड़ा अपना एक पर्सोना चेंज करूं, कम अपनी ओपिनियंस को वॉइस आउट करूं इतने क्लियरली, कपड़े शलवार कमीज़ दुपट्टा पहन के बैठ जाऊं ताकि लोग मेरे काम को देखें और मुझे बोल्ड के स्लॉट में डाल के मेरे काम को ना देखें? कभी आपने ये सोचा, कंसिडर किया? नहीं। अच्छा, कभी नहीं किया? क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं वो पुल ऑफ ही नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती एक दो वो pull हफ्ते off। बस, है ना? Can't हाँ, do it for नहीं long. हो ही नहीं सकता, अच्छा, मैं तो हो ही मर जाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने आप से भी बहुत ऑनेस्ट हूँ ना। I'm a very very private person and I'm very big on keeping my boundaries and my circle really really tight, and even my circle knows boundaries. And like if I need to sleep at 9 or 8, everyone's gonna know. If they're watching a film, they need to leave, and I ask my friends, okay, you guys need to leave, or I'm just gonna go to sleep, please don't make noise. मतलब it's very there, बहुत सारे लोगों से हैंडल नहीं होता और हर कोई मेरा दोस्त बन भी नहीं सकता, बहुत स्पेशल लोग मेरे दोस्त हैं। आवाम When से। I sit with myself at the end of the day and I go over everything I did and I said and what had happened throughout the day, और अगर मुझे कहीं ऐसा लगेगा कि मैंने अपने साथ झूठ बोला है, no, I don't want to do that, no. People can perceive me however they want. मेरे लिए important ये है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मुझे सुकून है या नहीं है, मैं रात को अच्छी नींद सोती हूँ या नहीं, मैं खुश हूँ या नहीं, मैं ज़्यादा important हूँ बस। और तुम्हें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता? That's a question you're stuck with, by the way. शायद बहुत लोगों ने और भी पूछा हो आपसे। ट्रोलिंग से फ़र्क पड़ना, देखिए मेन चीज़ें तो बहुत, people are really 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 mean, like really mean. But I do understand if you're sitting in a home where you're not allowed to go out and the only thing you have is your phone or पुराना सा कंप्यूटर जहाँ जाके आप दूसरों को गालियाँ लिख सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी पे आप सिर्फ रश कर सकते हैं और ये देख के कि ओ माय गॉड शी इज़ जस्ट ट्रैवलिंग ऑन हर ओन वेयरिंग अ लिटिल ड्रेस, कितनी गंदे घुटने हैं इसके, you know? छी, शावर नहीं लेती कभी, ये गंदी काले घुटनों वाली। पढ़ती हैं आप हाँ, कमेंट्स? हाँ, ये बहुत पहले के कमेंट्स हैं। फ्लोरेंस जब मैं गई थी, I attended a film school in Florence for 3 months and I lived there, and I had taken a picture, someone took a picture of me in front of the cathedral. Before that, I was sitting on the ground and I was taking pictures of the cathedral, so my घुटने were on the ground and I was wearing a very little dress. तो उसके बाद वो घुटनों वाला कमेंट आया एंड आई वाज लाइक, इसके पास और कुछ नहीं बचा था ना मुझे डिस करने के लिए। आई फील सो बैड फॉर दीज पीपल आर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड एंड आई फील लाइक दीज पीपल, इनकी क्या जिंदगी है और उनका क्या फ्यूचर है और इनकी क्या लाइफ होगी, इनके लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। कभी कमेंट्स ऑफ करती हो पोस्ट के? मैंने पहले ये किया था, जब मैंने डिलीट नहीं किया था अपना अकाउंट, उससे पहले मैं करती थी, कमेंट्स ऑफ करती थी, बट व्हाट हैपेंस इज देन दे स्टार्ट डीएमिंग यू गालियाँ, सो आई इवन डिलीटेड माई इंस्टाग्राम के व्हाई डू आई नीड टू हेयर दिस when I'm in Italy, I'm enjoying myself, this is so nice, I'm such a wonderful time, you know. तो मैंने डिलीट कर दिया अपना पूरा वो, and then now unfortunately I had to get back in. I might delete it again, I don't know, but now I see them as like, I don't even consider them people. I consider them like robotic internet wiggles. वो कीड़े होते हैं ना, वो जो पतले पतले से यूं करके जो घूमते रहते थे, मुझे बचपन में दिखते थे, इस तरह के मुझे कीड़े लगते हैं जो बस यूं घूमते रहते हैं, जो they're just like robotic wiggles that have no mind or no future or no कुछ भी नहीं है।
सिर्फ गंद और गालियाँ भरी हुई हैं। तो फिर तुम उन्हें अटेंशन नहीं दोगी? अटेंशन क्या देनी है, मैं तो अब देखती भी नहीं हूँ। आप कमेंट्स नहीं रीड करती? नहीं। आई थिंक दैट्स हेल्दी बिकॉज कमेंट्स तो ऐसे ही रहेंगे ना हमेशा। माई बोथ फोन्स आर ऑन साइलेंट ऑल द टाइम। अच्छा। ऑल द टाइम एवरीवन नोज कि मैं फ़ोन नहीं उठाती। मैं फ़ोन मुझे कोई भी नहीं करता। तो कॉलिंग फिर इज आपसे इन टच कैसे करते होते हैं? टेक्स्ट मैसेज आप पढ़ लेती हैं? हाँ, अच्छा। क्योंकि उसकी लाइट ऑन होती है ना फोन के की। लिए पूछ रही हूँ। जैसे ही फोन की लाइट ऑन होती है मुझे होता है कि अच्छा टेक्स्ट आया है, वरना माई फोन्स आर वेरी अवे फ्रॉम मी। आई एम नॉट अ फोन पर्सन एट ऑल. I can completely go on without a phone for like 7-8 days and just not even miss my phone. Okay, do you think because you are somebody who obsesses over a role, who gets so immersed in it, are you like that in your relationships also? It could be with your family, your friends, or a romance. Oh yeah, I'm an extremist. ये I'm an बड़ी extremist. खतरनाक बात है, ये हेल्दी बात नहीं है Healthy mentally. बात नहीं है, but I mean professionally it does work for me. इवन प्रोफेशनली मेंटली हेल्दी बात नहीं है बिकॉज आप जो किरदार प्ले कर रहे हैं जाहिर है वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, कोई हैप्पी गो लकी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होते नहीं। लेकिन वो प्राइस पे करना is worth it, I think. Every time I go down the rabbit hole after a character, it is very, very dark, but it's worth it. With my personal relationships, the last relationship I had was obviously with my husband. I haven't dated since then. I haven't been in a relationship. I've just been working on myself. I've been traveling. I've been growing. I've been exposing myself to different people, different conversations, different cultures, and learning and really getting to know myself. क्योंकि जब तक मैं खुद को अच्छी तरह नहीं जानूंगी तब तक मैं खुद के पास वापस कैसे आऊँगी? एक तो पहला ये, दूसरा मैं दूसरे को कैसे समझाऊंगी? एंड द थिंग इज नाउ आई नो दैट आई बिकम द कैरेक्टर. इससे पहले ये 2-3 आई थिंक मैंने गुस्ताख किया था, फिर मैंने रकीब से किया था, और फिर मैंने गुस्ताख में मुझे फील हुआ था मैं बहुत बदतमीज़ हो गई हूँ. आई वॉज सच अ like I was so. तो कैमरा जब रोल होने से 1 घंटे पहले से you'd be in that zone कि पूरे वक्त ही पूरा वक्त घर जाके भी I don't know how Danny put up with this shit. I don't know. I salute him. उस बेचारे को भी नहीं पता था कि ये मेरे साथ होता है, और मुझे भी उस वक्त ये नहीं पता था कि ये मेरे साथ होता है. मैंने बैठ के रियलाइज किया है कि oh my god, this is what happens to me. So whoever comes in my life next, I am going to tell them that this is what happens if you want to live with several different people at one time. Then please, yeah, welcome. And you will have to love me a lot to handle this. You know, I know that it's a lot, but also I think it's very fun. You get to meet new girls every 2-3 months. बदतमीज हो तो हाँ, बदतमीज हो तो वो आपकी अपनी मतलब एक अलग जर्नी है, वो अलग जर्नी है. keeps life interesting. Yes, you could look at it that way. You will never be bored. You will never be bored of me. I will always surprise you. All your life. I don't think you're boring even the way you are. So No, I could be boring. I could be very. अगर मैं बहुत कोई deep or intense. I did a play called Siskiyan for Bowl. It was me, Hina Dilpazir, Nadeem Beg, and Maria Vasti. A very dark script. Very dark script. And I was so just. मैं सन्नाटे में होती थी हर वक्त. एक तो क्योंकि आप उसमें रहते भी हैं, क्योंकि आपको हर वक्त इतना सैड, और आपकी सैड सिर्फ यहाँ से सैड नहीं कि सैड, नो, यहाँ से सैड कि आपकी सिर्फ आपकी एनर्जी अंदर आए रूम के और सब सैड हो रहे हैं, वो वाला सैड, यू नो. सो आई हैव बीन दैट टू. And there is a part of me, and I've learned to embrace that part of me that is very, very dark, and is very, very sad, and I love her. I love her. She's so vulnerable, and she is the one who keeps me grounded. She is the one who keeps me protected from getting too carried away in the limelight. Who reminds me it's not real or it's temporary. It's very temporary. क्योंकि मैंने देखा है ना
Ruhi Banu, my khala, I've seen her when she was going through her 40s, her 50s, letting go of the fame and कितनी तारीफें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी हाँ, होंगी surrounded by admirers. हर वक्त रूही बानो अभी मुझे लोग आके उनकी तारीफ करते हैं तो मतलब उनको कितनी तारीफ करते होंगे और फिर वो निकल के वहाँ से अब आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है और आपकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है कोई नहीं पूछता फैंस खत्म हो जाते हैं एडमायरर्स जो सारे तारीफ करने वाले दोस्त सिर्फ everyone loves to talk about it. No one wants to do anything about it. No one wants to do anything about it. Everyone loves talking about it. And then I saw my mom. My mom used to perform. She used to act. She used to sing. She had a really hard time transitioning when she was in her 40s. And I was growing up. I was a teenager. She had a very difficult time transitioning because she was also like Rohani Banu, and she would go on the stage and just light up the stage and start like singing and like alagi. And then there comes a time where when she took us to America and we were trying to like settle there and everything, we had to move back and forth, and Mama had to let go of all the Rohani Banu and then just become a mother and then just work at like salons and threading and do these things to just support us. You like moving from one character to the other, one place to the other. Do you think you will be able to settle down ever into one place with one person? That's a question. See, that's what I've been working on for the past 3 years. Knowing myself enough to know if I can be stable. Yes, I can be stable. I want it so much. Because in my entire life, like we've moved so much, even when I was a kid, and then my own traveling. Now, my first priority is to be stable. And I think once I'm stable, that's when I'll find a stable relationship where I am. And do you think you got married at a time when you did not recognize this thing about yourself? हाँ नहीं उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं पता था ना उस वक्त तो when you fall in love and you're in your 20s, you just you're in love and you just want to do whatever makes that person happy or whatever you think should be, तो ये तो बहुत दूर की एक सोच थी मैं इतना गहरा नहीं सोचा था मैंने and actually the funny thing is me or Danny, both of us, we had no idea that we were going to get married in the next like month. We had no idea. And Danny's mom actually suggested when COVID happened, they were really like, they were really afraid that if something happens to them, they want to see us settled. And that is why we actually had a nikah. Baki, this wasn't on our timeline. And we would have maybe, if it was up to me, I would have waited for at least 4 to 5 years and then got married. Decided. Yeah. अच्छा. Yeah. इतनी बड़ी हो जाती मैं और फिर इतनी समझदार होती. हाँ इतनी समझ होना I think बहुत ज़रूरी है हमें या तो बिल्कुल जो young लड़कियों की शादी हो जाती है I feel like that works because they're so young and then they just grow with the partner and they evolve with the partner and it's easier, or wait until you're like 32, 33, 34 and then get married. But Faryal, this hasn't scared you off marriage or relationships, no. Right? No. नहीं I feel क्योंकि in my 20s, obviously I was coming in with a lot of baggage and a lot of history of a child
and a teenager who has just only worked and hasn't had the time to actually socialize. My friends called me an overachiever. Like my GPA was like 4.0. Really? And I was and I was an honors student, and I used to work 5 days a week, and I used to go to school to university 2 days a week. So no days left to actually hang with the girls or the friends or have a relationship or have a boyfriend or anything. Nothing. I was just working all the time and I was studying. तो वो मुझे टाइम ही नहीं मिला अपने ऊपर काम करने का. And then I met Danny, and then I felt so much in love because he knew how to live. He just knew how to live, and it was so, like, you know, inspiring to me कि ये कितनी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीता है. Wow. You know, and I think Danny was that point where it all just turned, and I learned how to live by him. Maybe he learned how to be more like serious by me, but like I learned how to live by him, how to just be in the moment and be happy with what I have. And he saw me. He's like, bro, like you need to chill. You need to chill. You are like बहुत ज़्यादा है ये जो तुम करती हो अपने साथ. So at that point, I wish I was this age. And I would have, you know, it would have been completely different. It would have been completely different. Us waqt, I did not have enough knowledge on how to be with a person and how to be, you know, also I lived alone for such a long time. कितना मुश्किल होता है जब आप एकदम से किसी के साथ रहने लग जाते हैं या, you know, you are not, no one teaches you these things. Even when I go home, at my mom's, and I have to constantly remind her, I don't live with anyone, you have to tell me these things. Oh. Yeah. I tell her, I'm like, तो मम्मा मुझे नहीं बताना, आप मुझे बताएं क्योंकि मैं तो किसी के साथ नहीं रहती हूँ, तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको. अच्छा इस तरह करो, हाँ करो. ऐसे होता है ये. बिल्कुल. Because you get used to it. Of course, yes. Listen, do you still struggle with body weight, or is that a... I still do. It's, I mean, I've learned to love my body, but there are times where as soon as I see like a shoot or something and I don't look the way I think I should look, but it's not sitting and sulking in my own little, you know, then I do something about it. I have an entire gym at home. तो मैं फिर शुरू हो जाती हूँ. And it's part of your routine now. Yeah. It takes me like 2 weeks to actually drop. How lucky? Not lucky. Then I work out. Yeah, I work out for like 3 to 4 hours every day. And watch what you eat. Yeah. अब मैं सोच रही हूँ कि रकीब से के बाद रकीब से जैसे ड्रामा के इंतज़ार में नहीं किया कुछ, अब बकरी आ गई है. अब बकरी आ गई है. अब बकरी जैसी स्क्रिप्ट ढूंढ होगी तब तक. नहीं. Till then you travel the world. अब मैं पता क्या करना चाहती. Actually अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं एक बहुत सादा कैरेक्टर करना चाहती हूँ जिसमें मेरा कोई मेकअप ना हो, जिसमें बहुत सीरियस. I mean, I wanted to be an art film that is not for Pakistan and only for the festivals, or I want to do a film जो कि I don't know, I have this vision, like एक mental picture है मेरे पास, लेकिन मैं उसको बता नहीं सकती हूँ. गाँव की जैसे औरतें होती हैं जो हुक्का बुक्का पीती हैं, काजल चाजल लगा हुआ होता है बहुत सारा, ग्रंजी सी औरतें होती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, कुछ पान भी चबाती हैं, दांत भी गंदे होते हैं. वो वाली फिल्म होगी, ड्रामा नहीं होगा ये. चाहे ड्रामा. अच्छा, you're open to dramas also. Yeah. Of course I'm open to dramas. I just need it to be a good drama. I just need it to be a good script and a good director. That's all. Okay. Maybe it'll come your way. Maybe we'll have another interview soon rather than... Or maybe we can call Beagle right after this.
listen, I need you to give me a script. Just start writing something. Good luck finding that next script, and Thank good you. luck with all that you do. Thank you, Faryal. Thank you.